I would like to invite on the stage Swasth Briksh Foundation. This is an organization, this is an NGO, which is working on cervical cancer, which is a burning issue today, nowadays. So I would like to welcome from Swasth Briksh Foundation. Please come on the stage to give the presentation. Sarve Bhavantu Sukhinaha. May all be happy. A very good afternoon to one and all. I'm Dr. Deepika Chandok, founder president of Swasth Briksh Foundation Nagpur. With me here is Mr. Abhishek Chawla. He's our founder vice president of SVF Nagpur, and we have our youth president Ankush Bijewar with us. So, ladies and gentlemen, we are here not only to represent the work of our foundation, but more than that, we need to speak about a very burning issue. So today, when we have our Honorable Prime Minister speaking to Bill Gates regarding an important health issue, we have people like Sudha Murthy giving a maiden speech in the Parliament regarding something which is very important for women healthcare. Can anybody tell me what that issue is about? Anybody? Absolutely. So the topic, the issue, the burning issue today is cervical cancer. And as we all know कि cervical cancer का नाम हमने आजकल गए एक साल में काफ़ी सुना होगा. But the sad part is कि इसके बारे में awareness बहुत कम है. And we as Swasth Briksh Foundation have been working on cervical cancer since the past 2.5 years. ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है that SVF Nagpur, we are a group of more than 100 doctors and professionals of Nagpur. Or the reason we started working on this is because we had two ladies who were very close to us. एक corporator lady थी और एक gynecologist थी. We lost both of them to this cervical cancer. और उस दिन हमें लगा that let's do something sustainable for the society and something which would last with the woman till the last breath. So what is this cervical cancer? हम यहाँ वहाँ कभी टीवी पे कभी कोई पूनम पांडे का आपने सुना होगा, उसने बीच में एक न्यूज़ आई थी कि पूनम पांडे की डेथ हो गई है सर्वाइकल कैंसर की वजह से. दैट वाज अ वेरी वियर्ड स्टंट. उसकी एक्चुअली डेथ नहीं हुई थी, बट उन्होंने जस्ट टू डू सम अवेयरनेस शी हैड डन समथिंग लाइक दिस. पीपल लाइक जानवी कपूर एंड ऑल दीज पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट. तो क्या है ये और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? सो लेट मी टेल यू, सर्वाइकल कैंसर एज वी ऑल नो इज द कैंसर ऑफ द सर्विक्स. सर्विक्स मतलब जो यूट्रस का माउथ होता है उसको सर्विक्स कहते हैं. और विमेन में सबसे नंबर 1 कैंसर कौन सा है आप सबको पता होगा? Absolutely, breast cancer. So the second is the cervical cancer, and soon it is said that it is going to replace breast cancer because it is growing at a very rapid stage. Last 5 to 10 years में हमने देखा होगा कि suddenly हम सुनते हैं कि women का hysterectomy जिसको कहते हैं uterus removal बहुत बढ़ गया है, and lot of women are also losing their lives. It's very surprising that in India every 8 minutes, one woman is losing her life to the cervical cancer. And it is even more shocking that if we talk about the global deaths, पूरे विश्व में जितनी deaths हो रही है उतने उन deaths में 27% deaths are occurring only in our country. So we are bearing 1/4 of the mortality rate of cervical cancer in the entire world. And this can be easily controlled and this can be easily stopped. So what do we do? First thing that we have to be aware. So the next 10 minutes, 8 to 10 minutes, we are going to speak, of course, about the process, what we do. But more than this is more of an awareness session, because I assure you that these 8 minutes are going to save the life of at least one lady, one girl, one female in your family. So cervical cancer is, like I said, the cancer of the uterus. इसमें होता ये है कि it is caused due to the HPV virus. HPV का full form है human papilloma virus. This virus is present both in males as well as females. So cervical cancer is basically a sexually transmitted disease. ये जो HPV virus होता है ना, like any other virus, almost 90% of the population will encounter
दिस HPV वायरस सम टाइम इन देयर लाइफ. तो होता ये है कि HPV वायरस कॉजेज पीनियल कैंसर, एनल कैंसर इन मेन एंड सर्वाइकल कैंसर इन women. सो व्हाई आर वी फोकस्ड ओनली ऑन women? बिकॉज ये सर्वाइकल कैंसर की जो तादाद है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. द प्रॉब्लम विद दिस डिसऑर्डर, दिस डिसीज रादर, इज दैट दो जो सिम्टम्स आते हैं वो स्टेज 3 एंड 4 पे आते हैं. सो स्टेज 1 एंड 2 पे अगर कोई सिम्टम ही नहीं है, और स्पेशली हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो थोड़ी आज भी हेजिटेट करती है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास लगता है कि घर के नुस्खे कुछ कर लेते हैं एंड द प्रॉब्लम विल सबसाइड. सो देन द वुमन व्हेन एक्चुअली शी हैज सिम्टम्स, इट इज ऑलरेडी एट स्टेज 3 and stage 4, and that is the point where the uterus has to be removed and lot of women lose their lives. Apart from that, the financial burden is extremely huge on the entire family. The mental agony is a complete separate part. So basically this disorder, this disease, yes, it is sexually transmitted, but the good news is, the good part is that it can be easily controlled. अब मैं महिलाओं के लिए बताना चाहूँगी, above 25 years जो ladies है उन्होंने एक चीज़ करानी चाहिए which is known as the pap smear. Right? It is a vaginal smear which is mandatory, and this is only the test which will give you the symptoms of the early disease of the cervical cancer. Now let us talk about the the hot topic, you can say, the cervical cancer vaccine. ये होती क्या है? Cervical cancer vaccine is a preventive vaccine, right? जैसे हमारी चिकन पॉक्स वैक्सीन है या तो फिर पोलियो वैक्सीन है. सो आगे होना नहीं चाहिए लाइफ में, इसलिए ये वैक्सीन दी जाती है. Now what is the age group? Again 9 to 45 years में ये वैक्सीन दी जानी चाहिए. According to the WHO recommendations, this vaccine has been readily accepted, available and given since the past more than 20 years all around the world. Countries like US, UK, the women, more than 96% women are vaccinated, and it is very disheartening that in our country less than 1% women are vaccinated for cervical cancer. When we talk about the vaccination, 9 से 20 का जो एज ग्रुप है, 9 to 20 years, a single dose is recommended by the WHO. When I say a single dose, it is an intramuscular vaccine. 2 से 4 सेकेंड लगते हैं ये वैक्सीन लेने के लिए. 0.5 ml is the vaccine dose which is given. This one dose will confer more than 95% immunity. इसका मतलब ये है कि 95% से ज़्यादा चांसेस है कि उस लड़की को कभी लाइफ में सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा. If the female is about 20 years of age, that is 21 to 45 के बीच में, the WHO recommends 2 doses which is 0 months and 6 months. As in अगर आज वैक्सीन ली है तो दूसरा डोज 6 months के बाद मिलता है. Generally the focus right now is on young girls, क्योंकि कहा जाता है कि before marriage or before they are sexually active, if this vaccine is given, the impact of the vaccine, the immunity development is much more. Now let us talk about the most important issue which is the safety. बहुत लोग हमें पूछते हैं बीइंग डॉक्टर्स कि इज़ दिस वैक्सीन सेफ, क्योंकि कोविड ईरा से हम लोग जिस गुजरे हैं, एंड एवरी टाइम वी अटर द वर्ड वैक्सीन पीपल कंपेयर इट विद द कोविड, राइट? सो लेट मी टेल यू, लाइक आई सेड, दिस वैक्सीन हैज़ बीन सेफली गिवन सिंस द पास्ट more than 20 years. More than 96% women in 96% women in developed countries are vaccinated, and if we talk about the safety, it is completely safe. As opposed to the COVID vaccine, if we compare, COVID was an emergency, we all know. So with minimal research, the vaccine was launched, which was pretty decent. But yes, 0.1% people might have some side effects. But this vaccine has absolutely no side effects. This is not me talking. This is the World Health Organization, and there are various studies which have been published. इस वैक्सीन लेने के बाद भी 99% फीवर भी नहीं आता है. अगर किसी बच्ची को फीवर आता है तो within a day it is sorted. Also, after taking this vaccine, generally as our NGO we do give a certificate. So मैं urge करना चाहूँगी कि कभी भी आप ये वैक्सीन लेने जाए तो make sure that you have a certificate from the gynecologist or the pediatrician. The cost of this vaccine actually is high, especially for the low socioeconomic. The cost in the private practice is around 4,000 to 8,000 rupees, which is absolutely unaffordable to the tribals and the rural population. So we as an NGO feel the need कि जहाँ एक्चुअली ज़रूरत है, जहाँ ये लड़कियाँ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती और हाइजीनिक प्रैक्टिस भी नहीं है, उन तक ये
वैक्सीन पहुंचनी चाहिए एंड आई एम रियली प्राउड टू शेयर विथ यू दैट टिल डेट वी हैव वैक्सीनेटेड मोर देन 13,500 अंडर प्रिविलेज ट्राइबल गर्ल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. Thank you. And we have created awareness for more than 65,000 female beneficiaries. The struggle is still going on, and the main struggle, let me be very honest with you, is the cost of the vaccine. क्योंकि awareness, yes, we being doctors हम लोग aware करते हैं, लेकिन आज government भी इसको launch इसीलिए नहीं कर पा रही है because the cost of the vaccine is high. But the good news here is that this year Nirmala Sitharaman ma'am has announced that they've given a budget for the cervical cancer, and in bits and pieces the government is starting with small vaccinations as a pilot, and slowly they are going to cover, which is going to take probably more than 20 years. But yes, we have to be very hopeful. Just a request to all of you sitting here, we have females in our family, we have relatives, we keep posting on social media. Please make sure every female in your family between the age of 9 and 45 is vaccinated for cervical cancer, क्योंकि इसके symptoms late आते हैं, it is spreading like wildfire, and this one vaccine can completely save the life of a female. This is something which will stay with the girl, the lady, till her last breath. So please get your family vaccinated. Now I would like to call upon my co-founder Abhishek Chawla sir for the further proceedings. Thank you so much. Jai Hind. Yeah. Sir, above 45, the effectivity of the vaccine is not much. So pap smear is recommended above 45 years. Ji. Thank you so much, ma'am. I would also like to request Shri Dinesh Agrawal ji kindly come on the stage and please be seated. And Shri Pushparaj Dalal ji, you also please kindly come and join on the stage. So moving ahead, yes, it is a burning issue. और हमें पता है इसका इलाज क्या है, इसकी प्रिवेंटिव वैक्सीन क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट क्या है? वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, वैक्सीन लगाना इशू नहीं है. वैक्सीन बच्चों के कन्विंस करना ये वैक्सीन लेना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब वी आर फेसिंग इन द रूरल एंड ट्राइबल पार्ट्स, बिकॉज वी डू नीड द कंसेंट ऑफ 9 to 20, एटलीस्ट 9 to 18 years of girls. We do need the consent of their parents to get this vaccine for their child. So this is the one of the most difficult part. And 2.5 years ago, when we have started this initiative, we faced the challenge and we vaccinated only 100 beneficiaries a day. Then we realized that it is not just a vaccine which help us to eradicate cervical cancer, but of course awareness is also one of the major challenges. Then we have developed a very robust model as a cancer kavach initiative, and we have built a strong SOPs, standard operating procedures, because we have decided to eradicate this cancer, cervical cancer, all across India, not just Nagpur, not just one rural area. So we have developed a very 12-step process flow from need analysis till the feedback, awareness, the cold chain management of the vaccines. Again, the data of the beneficiary is again very important. So we collect each and every data. We linked it with Aadhaar card. We provide them with the certificate for their lifetime references. So with this 12-step process, now we have developed a roadmap to make Nagpur as the first cervical cancer shielded city of India, and we are on our way. And of course, with the help of CSR, these are few photographs of our awareness camp. Next. So this is how we conduct awareness as various schools and colleges, Nagar Parishad, Jila Parishad houses. Next, this is our vaccination camp. The vaccination camp conducted with all the safety measures, quality assurance, the cold chain maintenance of the vaccines. Next. So, a few prestigious projects we have conducted at Western Naval Command, Pench Tiger Reserves, and many more. So, of course, we do not do this for the media publicity, but yes, we are getting good appreciation from media houses. So, almost more than 32 media houses cover our initiative, and they publicize, which helps us to spread the awareness and our noble words to the society. And finally,
Our association with CSR partner is of course a boon for the society, boon for the girl, and we thank all our associates in a very short span of time. All the CSR partners and corporates have supported us in this initiative, and we would like you to come forward and support our initiative, because it is not just Swasthriksha Foundation, it is each and every household, it is the duty of each and every household, houses, males, females, to spread these words, to safeguard our girls, females of this dangerous cervical cancer. And lastly, yes, what is our vision about Viksit Bharat? We are taking this one issue as in sync with the government of India, that by 2047 we will eradicate cervical cancer completely out of India, and this is our vision of Swasthriksha Foundation. Thank you so much. कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्म करते चलो, फल की इच्छा नहीं करना है, and that's what we are doing for the society. Thank you so much. Thank you And so much, of sir. course, thank you to IIHR for honoring us with this award, and this belongs to each and every member, volunteer, associate of Swasthriksha Foundation. Thank you so much. Thank you so much. Now, also I would like to request Shri Sanjay Arora, kindly you also come and join on the stage. Please settle down. And after this, I would like to request Dr. P. Sanjay. He is an associate professor, Indian Institute of Management, Sarmor, Himachal Pradesh. He is the most highly qualified IIM professor in India. Has 10 academic degrees, including PhD from India, MPhil from London Business School, UK, MBA from University of Hawaii, and etc. So, let me welcome, without wasting any time, because we are really running out of time. So, I would like to request Dr. P. Sanjay on the stage. Good afternoon, everyone. First of all, let me thank the organizers, IIHR, for awarding me with the Outstanding Leadership Award. And I would like to mention that, I have been part of multiple NGOs. One of the NGOs where I have been most active has been Art of Living Foundation. And thank you for awarding it. And I take it on behalf of all the volunteers of the foundation. And one of the volunteers is sitting here. So it's not an award to me, it is an award to all of us. So, before, Puja Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji says that, whenever any knowledge is to be given, first spend 30 seconds in silence praying to God. So let us just close our eyes for 30 seconds and I'll just recite a mantra and then we start. Om Namah Pranavarthaya Shuddha Jnane Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Yes, you can open your eyes. So, since the topic is role of CSR in India, India became the first country in 2013-14 to legally mandate the corporate social responsibility. And of course, I don't want to go into the legal provisions, but one of the thresholds for applicability of CSR to a company was net profit of 5 crores or more. And when we talk of Viksit Bharat, Prime Minister Modi's call to the nation has been let sabka saath sabka vikas, or sabka, everyone must participate in this mission of Viksit Bharat. But let me just present you a figure where academic research seems to suggest that some companies, I know most of the companies are doing it, but just to present a fact that some companies, in order to miss that threshold of 5 crores, they deliberately lower their profits to below 5 crores. So are you getting that? Because if you qualify under a 5 crore profit, then you have to do CSR activities and you have to contribute 2% of your net profits. But unfortunately, some companies don't do that and they deliberately fall below the 5 crore threshold. And the interesting part is the term CSR, the credit is given to an American economist, Howard Bowen, for coining the term CSR in 1953. As per many Western books and thought processes that I have seen, they say it was being practiced since 1800s and 1900s, when the wealthy business families like Rockefeller, as Sri Ravi Iyer ji was mentioning, and others, they started
contributing for social causes. But our tradition for thousands of years, the 4 pillars of Purusharth have been Dharma, Arth, Kam and Moksha. So Dharma comes first and then Arth comes. So Arth is to be, अर्थ उपार्जन करना है लेकिन धर्म का पालन करते हुए, अदरवाइज वो अर्थ किसी काम का नहीं है. द अदर पार्ट इज, एज अदर्स वर सेइंग, दैट यू नो, since they are attributing CSR to their own philosophy, before US was practically born, because Columbus तो भारत की खोज में आया था, अमेरिका तो वो बाद में पहुंचा था. तो before they were born, Bhamashah had contributed his entire wealth for the country, for Maharana Pratap to fight against the Mughals. So need today is still the same. We are, even today, this battle is still on. We just have to identify who is Maharana Pratap and who is not. So Viksit Bharat, we are already Viksit in culturally, civilizationally and spiritually. We are already Viksit. But what we need today, as one of the speakers was saying, that in Bombay, if you go on one side, you will see Jhopadpatti, and on the other side, you will see high rises. So that's where we have to make it Viksit, so that infrastructure wise and on a per capita income wise, we also become Viksit. And some of the, so talking about Maharana Pratap, Maharana Mewar Foundation, I have been closely associated with them also. And they give a lot of recognition to people who are serving the society. I'm part of a federation called Federation of Industries of India in Bombay. I was there and just 2 days back. And they are also doing amazing work. And for Art of Living, unfortunately, I have been told we only have 10 minutes. So I'll not go into a long list, but we have the work done by Art of Living Foundation, which spans across water conservation, waste management, skill development, sustainable agriculture, free education, afforestation and environment, then, and so many women empowerment, rural development, border villages. So for every single item that I mentioned, I have a long list of the work that has been done. So it is probably not possible in 10 minutes to cover that, but just to say that, if Bharat has to become Viksit, then the guidance has to come from spiritual leaders. Traditionally, thousands of years back, kings of India used to go to Raja Dashrath थे या महाराजा राम थे, तो महर्षि वशिष्ठ के पास कंसल्ट करते थे कि आप मार्गदर्शन करिए, right? So we have to still go back to our ancient civilization where the religious leaders at least play a role in terms of guiding the development of the nation. Because one of our speakers, शायद रवि अय्यर जी साहब बोल रहे थे कि how did some people know, he mentioned about 2 spiritual leaders, how did they foresee that some war is coming up? It is the power of spirituality. You can't read every single book, but when you practice spirituality, then you develop those intuitions, then you can see what's going to happen. And I'm very pleased to mention that even at IIM Sirmaur, we have started a course on yoga and meditation. We are starting now in October to December, so which I'll be of course teaching. I am a teacher of Art of Living and yoga also. And last year we had taught a course on managing life and business, which entailed Vedas, Kautilya's Arthashastra, and a lot of other areas covering the national education policy that was being mentioned. So the role of educationists in the Viksit Bharat process has to be very, very important. And let me just also mention a few things related to, so what are the various focus areas of CSR? Schedule 7 of Companies Act lists 12 or 13 such areas. I'll just name them. First area is eradicating hunger and poverty and malnutrition. Second is promoting education. Third, promoting gender equality. Fourth, environmental sustainability and ecological balance. Preservation of national heritage. Measures for benefit of armed forces. So there are like 12, 13 such areas. And we have to, so what I thought of was, for each of these areas,
we should, future conferences, we should have sub-themes for each of these areas where we discuss how are we going to work for the development of every single area. You will not believe, 2 days back I was in Bombay discussing with Pollution Control Board officials of Government of Maharashtra, and one area as simple as green hydrogen is a topic which will take 1 day to discuss. So we need to come up with a, as I said, detailed action plan. And what is the framework that I am proposing for that? One is where do we stand today? सबसे पहले हम कहाँ खड़े हैं, and where is it that we want to be? What are the steps required to reach where we want to be? What will be the role of the industry, and what will be, of course, government is there, but what will be the role of industry? What will be the role of common citizen? So, and we have also proposed a balance sheet framework as to who contributes to emissions and who will solve the emission problem. So we have actually come up with a balance sheet framework, which I was discussing with Major General Chadha, not Major General Chadha of Maharashtra, Goa and Gujarat. He is the General Officer Commanding for Maharashtra, Goa, Gujarat. And how do we reach the timelines? And we have to build up scenarios for each of these. So we have to come up with detailed action plans. And for example, we have as given by PMO's office, we have a timeline for 2070 for net zero for India. But how do you reach net zero? Because every set of companies will have to work on that. So I'll just give you as an example for climate related disclosures. The net zero target as given by TCS is 2030, Reliance 2035, Tata Power says 2035, ONGC 2038, Oil India 2040, some of them are our sponsors also, Tata Group of Companies 2040 to 50, Adani 2050, Apollo Tyres 2050. So this is how, when every single company collaborates with the government's vision and becomes a partner in the nation's progress, that's how we will eventually attain the idea of Viksit Bharat, and that's only for one area, which is climate. And similarly, we have to come up with detailed action plans for each of the area, and also we have to come up with the scenarios, such as the most likely scenario is maybe by 2045 we will do it. But a pessimistic scenario also has to be built in, that if we fail to do so, then what are the contingency action measures that we plan to put in place. So these were some of the thoughts that I wanted to share. I have actually many slides, but I understand there is paucity of time. So I'll just basically, conclude that even though I have kind of been critical of the Western world, but we need not be over-influenced by the Western world, but at the same time, if any good ideas come, then we should be accepting that, and which is what is mentioned in our Rig Veda also, that Ano Bhadra Kritvo Yantu Vishwatah, ki let knowledge and noble thoughts come from all directions. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I would like to request on the stage Shri Sanjay Arora, who is the former director, Talcher Fertilizer Limited. Please welcome him with a big round of applause, everyone. Respected, learned on the dais, and the youngsters of the dais, I include the PSU officials, they are equally young. Thank you, IHR, for giving me the opportunity to share my views. Rather, before I say sharing my views, this is an opportunity for me to learn and set right the disha and dasha. जब दशा अच्छी है, दिशा ठीक है, तो हम जिस ओर जा रहे हैं वो हम पूरा उसको कर रहेंगे. Before I elaborate, our senior people have shared their views. Let me share my view. In fact, it's not a view, it's a practical experience which I experienced last year. I happened to go to Canada and we had to change the flight at Frankfurt. Frankfurt पहली बार जाना हुआ था. फ्लाइट चेंज करनी थी, टर्मिनल अलग था. So अब जर्मन आती नहीं थी. So but with this sign, and I had senior Sardarji with me,
उनको तो अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी, मेरे को तो थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती थी। कहते काका मैनू उस पासे ले जा, तू किस पासे जा रहा है? मैं कहा टोरंटो जा रहा हूँ। Then I asked the gentleman, a uniformed armed guy, different terminal 2A direction. वो कहता है I was surprised. You come from India? सरदार जी, great, नमस्ते, this side. ये फक्र है हमारे हिंदुस्तान का, ये फक्र है हमारे हिंदुस्तान का। जर्मनी को कुछ नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, बट वो कहता है इंडिया ग्रेट, नमस्ते। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। लोग क्या बोलते हैं, मैं तो अपने जो आंखों देखी सुनी और बात करता हूं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ अ कंट्री। भारत माता की जय हम सब बचपन से सुनते आए हैं। द पॉइंट फॉर मी टू वरी इज हियर, अगर भारत माता ना रहे तो क्या होगा, हमारा और आपका क्या होगा। विकसित भारत is not a social campaign, it is not optional, it is compulsion. मुझे पहले था कि मैं सर्व विश्व गुरु था, कुछ उस ज्ञान में धूल आ गई, मुझे नहीं पता। मैं नल और नील, हम इतिहास पढ़ते हैं, नल और नील को भी बताया गया था कि तुम्हारे पास तो ये ज्ञान है तो इतना बड़ा राम सेतु बना। आज विश्व गुरु हम हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और जब विश्व गुरु जब हम हैं तो क्या गुरु खाली अपनी ही बात करता है? अभी प्रोफेसर साहब ने हमें बताया, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग इज नॉट ओनली फॉर मी एंड माई सेल्फ, इट इज फॉर वी। बहुत कुछ हमने अभी इलेक्शन में सुना, कॉन्स्टिट्यूशन, और शायद यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स से मैं ही पूछना चाहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन की पहली पंक्ति क्या है, बता सकते हैं? गुड। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, और आगे चलता है। Now for me to remind myself, am I the I of the big group we? If I am, मुबारक है आपको। But if I am missing, let me contribute something. Let me contribute something to the great nation. और अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फील्ड बहुत है। अभी प्रोफेसर साहब ने हमें शेड्यूल्स के बारे में आकलन दिए, बहुत अच्छा है। द लॉन्ग लिस्ट इज देयर। रायर साहब ने बोला वो इंटरनेट में अगर हम लॉन्ग लिस्ट में एक दो भी कर पाएं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। इट्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। और बचपन में दादी माँ मुझे सिखाती थी, बचपन में दादी माँ वो सिखाती थी, 1.25 लाख तो एक लड़ाऊं, चिड़ियन तो मैं बाज तोड़ाऊं, ता गुरु गोबिंद सिंह कहलाऊं। दैट इज द थिंग वी ऑल कैन डू, सब्जेक्ट टू वी ऑल बिकम द आई। वो गीत हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो सब याद कर देखते सुनते हैं। बहुत हम अपनी बात करते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बट हम आगे बढ़ रहे हैं। और CSR का मुद्दा तो बहुत बड़ी चीज़ है। छोटा सा खाली इतना वो अपने आप को स्मरण कराना चाहता हूँ बिफोर आई कम टू 2-3-4 पॉइंट्स। वाई वी शुड डू एंड वेयर शुड वी डू, दैट वुड बी माई मेन फोकस। हम गीत वो सुनते आए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी ज़माने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बट आगे मैं इसके अगर चलूँ तो मुझे अपने आप को वही कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है। व्हाट आई शुड डू, मैं औरों को तो खींचूं, बट पहले खुद तो मजबूत हो जाऊं। कुछ ऐसा तो नहीं कुछ मैं करने को, लोग भाई साहब जब ट्रैफिक सिग्नल आप क्रॉस कर रहे हैं तो बोला भाई साहब आप मुझे तो बोल रहे हो, खुद तो चले जा रहे हो धड़ा के अपना। इट्स फॉर मी टू रिमाइंड कि यस,
छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो। अभी भी भाई साहब बता रहे थे कि हमने बहुत कुछ सुना, खाना उतना खाओ जितना अंदर जाए, वो टोकरे में ना जाए। भाई साहब ने बताया, सर एम आई राइट? यस। इट्स फॉर मी टू डिवाइस माई सेल्फ, क्या मैं आकलन कर रहा हूँ? और अगर कर रहा हूँ, मुबारक है, कर रहा हूँ तो मुबारक है, नहीं तो कृपया करके कर ली जाए। डिसिप्लिन, द सेल्फ डिसिप्लिन। और सबसे बड़ी चीज़, जब वोट की बात करें हैं, हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं सरकार ये करे, सरकार वो करे। फॉर मी टू रिवाइव माई सेल्फ, मैं वोट दिया कि नहीं दिया, मैं वोट दिया कि नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली जहां हम खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, दिल्ली में वोट परसेंटेज इस स्थान का सबसे कम है। गूगल आंकड़ा देख लीजिए। द वोटिंग परसेंटेज जिसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा मैं, दिल्ली का, कि वहाँ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, परसेंटेज वोट का वहाँ ज़्यादा जाता है। हम इस क्षेत्र को, जो अपने आप को इतने पढ़े लिखे बोलते हैं, हम वोट नहीं कर पाते हैं, कारण कोई भी हो। सो द फर्स्ट माई पॉइंट इज, प्लीज वोट, डू नॉट evade your responsibility. Get connected to the spirituality, because spirituality is not only the particular religion, it's the faith. मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हम जब एक दूसरे के सहारा बनेंगे ही तो कुछ आगे कर पाएंगे, अन्यथा आए हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अवार्ड लिए हैं, चल देंगे। बट हम आए हैं अपनी बात करने को, कुछ ना कुछ करने का। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे पहले बताया, सेव वाटर। सेव वाटर, जब तक हम पानी नहीं बचाएंगे, और मैं मुद्दे पे बात आता हूँ, हाउ डू यू सेव वाटर? पानी जितना पीना हो उतना पिए। स्पेशली द प्रैक्टिकल चीज़, व्हाट वी कैन डू एंड वी कैन डिवाइस एंड एजुकेट द अदर्स। हर एक के घर में एक्वा है, एक गिलास एक्वा पानी लेने से लिए कितना वेस्ट होता है। कैन वी पुट अ बकेट टू इट? कैन वी पुट दैट भरा हुआ बकेट टू द बगीचे में? Can we devise something where the AC drop that comes down, that goes to the drain? Can we do the water harvesting? Let us, for me to educate, मैं भी करूं, औरों को भी बताऊं कि यस, छोटी छोटी चीज़ें हैं। CSR कोई बहुत बड़ा माइथोलॉजी नहीं है, CSR बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मुझे छोटी छोटी चीज़ से ही चीज़ आगे बतानी है। और अगर मैं यहाँ बताऊं, सब बैठे हैं हम लोग, हम बोले प्लीज़ होल्ड योर ब्रेथ, भाई इतना करके छोड़ दो। कोई 1 मिनट ब्रेथ होल्ड करेगा, कोई 2 मिनट करेगा, कोई बहुत अच्छा योगा करता था 5 मिनट करेगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। हम बड़े बड़े बॉन्ड्स लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड्स, मेडिकल बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दैट बॉन्ड। अगर ये विश्व में पानी और जल नहीं होगा, ये सब धाराशाही के धाराशाही हो जाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी फिर वो याद करेगी, अच्छा शायद जैसे हम पिछली संस्कृति को याद करते हैं, नील डायनेस्टी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा डायनेस्टी, शायद वो हम वैसे ही आ जाएंगे। सेव वाटर। एंड फॉर द थिंग व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज हियर, प्रोफेसर साहब यहाँ पर हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज देयर, बट व्हाट वी वांट टू डू फॉर 2047, लेट अस डिवाइस समथिंग फॉर द ग्रीन बॉन्ड एंड द ब्लू बॉन्ड। छोटी सी कंट्री थी, सेशल्स, they devised blue bonds. Then the Scandinavian countries, they came in 2018 with the blue bonds. China came with 2020 with blue bonds. Even a country like Indonesia came with the blue bond. Let us save our oceans. Let us save our rivers. Let us save our environment. I appeal to IIHR, director साहब बैठे हैं. Let the communication be there with the authorities. Sir, bonds कृपया करके ग्रीन बॉन्ड को भी हम जनरेट एक्सरसाइज करें. कैसे करेंगे? डिवाइस करेंगे. द अदर कंट्रीज हैव देयर. दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस. हम और आगे एक्टिविटी करेंगे. बट इवन सो मच, सो छोटी सी छोटी चीज़, हर एक MP को सर लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है 5 करोड़ का. पूरे हिंदुस्तान में 800 ज़िले हैं. अगर 10% भी एनवायरनमेंट और वाटर पर भी हम खर्च कर दें तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. सवाल आ सकता है यंगस्टर्स में से, साहब हमें तो बहुत कुछ करना है.
सचिन तेंदुलकर का स्टेटमेंट आता है, टू स्कोर द फर्स्ट सेंचुरी यू हैव टू स्कोर द फर्स्ट रन. लेट अस स्कोर द फर्स्ट रन. लेट अस डू समथिंग. लेट अस डू समथिंग. थोड़ा थोड़ा करेंगे. और भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसे नहीं कहा 140 करोड़ हैं तो एक एक कदम हर व्यक्ति एक कदम ही आगे बढ़ाए. विश्व गुरु है, वी विल बी बैक टू आवर विश्व गुरु. So the second point which Professor Saab and Director Saab I would like to emphasize is, if we analyze the CSR funds which is being spent for the development of the local people, मैं अगर स्टेट वाइज आकलन करूं, it is flowing from Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra. I'm not going to the figures. Figure मेरे पास में है. But the funds which is given by Government of India to the different states, that is not in proportion to Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra. It goes UP, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, and I come to Maharashtra. It's a skewed way. It's a skewed way. क्या कुछ ऐसे अलाइन हो सकता है सर, वेयर जब मैं बोलता हूं सबका उत्थान करना, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ को मैंने ज़्यादा दे दिया, कुछ को कम दिया. आप कह सकते हैं CSR फंड बहुत थोड़ा होता है, यस बहुत थोड़ा सा होता है, बट कम से कम सबको थोड़ा लें. बिकॉज CSR फंड सर, यू वुड एग्री, everybody tries to utilize in the place where my unit is there. I was the CSR head of RCF. हम मुंबई में ही ज़्यादा घूमते थे. NTPC का वहाँ पर हैं, वो भी उसी इर्द गिर्द होते थे. सब लोग करते हैं, बट क्या कुछ अलाइन कर सकते हैं? आई एम वाइंडिंग अप. द सब्जेक्ट इज दिस, क्योंकि मेरा ही सब्जेक्ट है तो मैं तो 1 घंटा उसके बोल सकता हूँ. आई जस्ट वाइंड अप इन 2 minutes. We have next point which I would like to emphasize here, sir. We have a big population. We have a good technical know-how. Human capital हमारे पास में बहुत है. और मैं जब कनाडा और जर्मनी की एक्सपीरियंस बता रहा था, they treat the medical and treat the education line people high on the skies. कनाडा यूनिवर्सिटी में जब टोरंटो यूनिवर्सिटी में गया, सर व्हाई डोंट यू गिव सेशंस टू अस? आई वाज बेसिकली डीलिंग विद CSR एंड लेटर पार्ट लॉजिस्टिक्स. द क्वेश्चन इज, व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग दिशा, हमारी जो दशा इतनी अच्छी है, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स, द स्टूडेंट वर्कफोर्स एंड द एजुकेटेड एंड द एक्सपीरियंस्ड पीपल दिशा दे सकते हैं. कैन वी कंबाइन द ग्रुप ऑफ people who are plus 60 and say up to 75, उनको आप टेक्निकल नो हाउ उनसे ले सकते हैं. कभी किसी ज़माने में ठेले लेके कभी नहीं देखा विद्या ले लो, विद्या ले लो. बट द पीपल हु आर द यंगस्टर्स, द यूनिवर्सिटीज, द इंस्टीट्यूट्स, दे हैव टू कम अप टू द टेक्निकल पीपल. हमारे बच्चों की दशा अच्छी है, आप अपनी दिशा बताएं, आप दिशा बताएं कैसे हम आगे से आगे और कर सकते हैं. दैट इज द वे व्हाट वी कैन मूव. ऑब्वियसली माय प्रीडिसेसर्स हैव ऑलरेडी सेड अबाउट माय वुमेन हेल्थ. इट इज़ ऑफ द प्रायोरिटी बिकॉज ये हमारी भारतीय संस्कृति है. मैं सुबह भी घर में बात कर रहा था. इट्स स्पेशली फॉर द वुमेन वर्किंग. घर देखना, सास ससुर को देखना, बच्चों को देखना, it is not an easy joke unless until support साथ में हो. So ultimately, what I want to emphasize here, points to this बीस और भी हैं, but the point what I want to emphasize here and summarize, इसके पहले और slip आ जाए, पानी बचाएं, blue bonds and the green bonds. Technical know-how, जो अब दशा और दिशा का समावेश हो, उनको और कुछ नहीं चाहिए. आप जितना दो, हम लोग की उम्र भी जितना पूछे हैं, बिकॉज ये जो चीज़ें हैं. एंड बिफोर आई समराइज, जब दशा और दिशा की बात करी, प्लीज़ यंगस्टर्स, व्हेन यू कम टू दिस एज, यू विल सी 2047. हम देख पाए नहीं देख पाए मुझे नहीं पता, हम देख पाए ना देख पाए. यंगस्टर्स की मेरी अपील है, विच आई बीन अपीलिंग ओवर द 110 सेशंस
all over the country. Please learn one foreign language. Please learn one state language. ये आपको काम देगी, ये आपको काम देगी, क्योंकि आपकी ही एक एक काम, आपका ही एक एक काम वो आपको आगे से आगे ले जाएगा. ये आपको आगे से आगे ले जाएगा. आप आगे जाएंगे, देश जाएगा. और फिर आप बचपन में जब कहानी नहीं, वो गीत सुनते थे स्कूल में और बोलते भी थे, उसी से मैं समाप्त करूंगा. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन. जय हिंद. Now I would like to request Shri Dinesh Agarwal ji, who is working as a principal consultant with Consortia Advisory and has more than 45 years of experience in the areas of ESG, business excellence, corporate social responsibility, resettlement and rehabilitation, and land acquisition. Whatever, because this is not actually my part. I am an anchor, but I don't know these words. I'm not aware of these words. So he was also the general manager and national head of CSR. So let me welcome, without wasting any time, Shri Dinesh Agarwal ji. Please, thank you. धन्यवाद. आप सभी का धन्यवाद. मैं आपको कुछ सवाल पूछता हूँ आपसे और उस सवाल का बैकग्राउंड बताता हूँ. आप सबने रामायण पढ़ी हुई है, सुनी हुई है. उसमें आपको मालूम है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे और पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे. राइट. वो क्यों लेने गए थे संजीवनी बूटी? क्या हो गया था लक्ष्मण जी को? किसने किया था? राइट. अब सवाल ये उठता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और उनको बोला था बूटी ले आओ, लेकिन वो तो पूरा पहाड़ उठा लाए. क्यों उठा के लाए पहाड़? और उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था मैनेजमेंट की ओर से कि आपको बूटी लेके आना है. वो पूरा पहाड़ ले आए. क्या ये मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन का वायलेशन नहीं था? नंबर 2, वो चूंकि पूरा पहाड़ उठा के ले आए तो क्या उन्होंने बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं किया? एंड नंबर 3, पहाड़ उठा के क्यों लाए? एक बूटी ही तो लानी थी. क्या इसका जवाब है? आप कुछ कह रहे थे कि वो बूटी क्यों, मतलब पहाड़ क्यों उठा के लाए? आप लोग कुछ कह रहे थे, अब आप कह सकते हैं. उनको पहचान नहीं था. और आप ये जानते हैं कि उनको 8 सिद्धियां मालूम थी, 9 निधियां मालूम थी उनके पास थी, और वो सबसे ज़्यादा ज्ञान था. और उस ज्ञान के बाद भी जो है ये कहानी बताई गई कि उन्हें बूटी का पता नहीं था. हाँ. क्या पता आगे और क्या जरूरत पड़े तो मुझको टाइम वेस्ट करके अपने आदमी के लिए मैं फिर उधर कहाँ जाऊँ, या मेरे आदमी को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़े उसको क्या करना है. तो मैं पूरा पहाड़ ही उतार लाता हूँ ताकि युद्ध होने तक जो भी जितने भी घायल होंगे कुछ भी होंगे तो मैं इससे ट्रीट करे उसको कर सकूँ. इनके लिए तालियां. ये था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. जो हमारा स्टेक होल्डर है, मेरे को बोला गया एक के लिए, ये नहीं बोला गया सबके लिए लेके आओ. लेकिन मुझे मालूम है कि वही चीज़ सब लोग अफेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे सबका ध्यान रखना है. जब हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि हम एज ए कंपनी अपना तो ध्यान रख लेते हैं, अपनी कंपनी के अंदर ध्यान रख लेते हैं, अपनी बाउंड्री के अंदर ध्यान रख लेते हैं. लेकिन जब हम बाउंड्री के बाहर जाते हैं तो कई बार वहाँ पे पहले बिजली भी नहीं होती थी. आज बिजली तो आ गई है, या पानी नहीं है, या सड़क नहीं है,
या वहाँ पे स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? और वो दीवार ऐसी होती थी ऊंची जिसके अंदर वो आ नहीं सकते थे। वो बहुत बड़ा गेट लगा हुआ होता है, गेट पे चौकीदार बैठे हुए होते हैं, कई बार बंदूक लेके बैठे हुए होते हैं, कोई बाहर का गांव वाला अंदर नहीं आ सकता है। और ये कंपनियां उस एरिया में जाके अपना प्लांट लगा रही हैं, उनके ज़मीन पे लगा रही हैं, वो लोग आके काम करते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले या और लोग गाँव के उससे कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शुरू से गांव में लगाई गई, बहुत दूर लगाई गई कि वो वहाँ पे जाके कुछ CSR का काम करें। और वो CSR का काम जिस दिन से वो इस्टेब्लिश हुए थे उसी दिन से वो CSR का काम कर रहे हैं। और उसी को देखते हुए यदि आप देखेंगे, टाटाज वगैरह ने जमशेदपुर और उसके आसपास के पूरे ट्राइबल एरिया में पूरा एक इतना विकसित शहर बनाया है, और वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है बाहर वाले में और प्लांट के वर्कर में, कोई बाउंड्री नहीं है। हमारे यहाँ स्टील प्लांट में भी बाउंड्री नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह बाउंड्री ऐसी होती है कि कोई अंदर आ नहीं सकता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि CSR होती क्या चीज़ है, तो CSR से पहले मैं ये जानना चाहूँगा, लोग तो पुराना हमारे 1000 साल पहले 2000 साल पहले की भी बात कर रहे थे, सनातन की बात कर रहे थे। क्या आप लोगों को मालूम है कि एक इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात हुई थी कि हमारी अपनी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? जब हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आपने वो 5 ऋणों की बात सुनी होगी, और वो 5 ऋण क्या क्या हैं जो हम लोगों के ऊपर हैं, हम सबके ऊपर हैं। खासतौर से ये स्टूडेंट्स बताएं, क्या आपने सुना है कि वो 5 ऋण कौन से हैं? ऋण की बात कर रहे हैं, पंचभूत की बात नहीं कर रहे हैं। 5 ऋण आप सबको मालूम होना चाहिए, आपको शायद मालूम होगा जरूर। हाँ, और देव ऋण, वेरी गुड। ये 5 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, भू ऋण, राइट? और ये 5 ऋण क्यों होते हैं? क्योंकि इन 5 जगह से आपको अनकंडीशनल चीज मिली है, कोई कंडीशन नहीं थी। माँ आपको जन्म देती है, आपका पालन करती है, आपका वैल्यूज बनाती है, वो वैल्यूज और कोई नहीं बनाता है। पिता आपका पोषण करता है, पिता की वजह से ही आप इतने कैपेबल बन पाते हो कि आप अपना जीवन उपार्जन अपने आप कर सकते हो। गुरु शिक्षा देता है, और पहले इसीलिए गुरुकुल होते थे, वो कोई फीस नहीं लेते थे। आजकल की तरह नहीं है कि 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए साल की आपको फीस देनी होती है एक मैनेजमेंट स्कूल में, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। पहले तभी ज्ञान मिलता था, और ज्ञान उसी को मिलता था जो उसका पात्र होता था। पात्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद भू, पृथ्वी से जो आप अनाज लेते हो, आपको जल वायु सब कुछ पृथ्वी से मिलता है, उसके लिए पृथ्वी आपसे कुछ नहीं लेती है, आप कोई भी चीज़ नहीं देते हो पृथ्वी को। और देव, ईश्वर, और उसका क्या उन्होंने बोला है, यदि देना है ईश्वर को तो नर सेवा नारायण सेवा, हम में ही ईश्वर है। और यदि हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे तो अब हम इसको उऋण कैसे होंगे? यदि आपको वो पता चल गया तो मैं कहता हूं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो, CSR कर सकते हो, विकसित भारत बना सकते हो। मातृ ऋण को कैसे आप वापस करोगे? सेवा तो मातृ ऋण का हो गया, और जब मदर एक्सपायर हो जाती है उसके बाद भी आपको कुछ करना है। जो माँ ने बच्चों के लिए किया था, क्या हम अपने बच्चों के लिए वही कर सकते हैं? एंड देयरफॉर द CSR स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द चिल्ड्रन। पहला फोकस हमारा चिल्ड्रन है, दे आर द फ्यूचर।
और मैं फ्यूचर की बात क्यों करता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या डिफिनीशन है, आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। क्या डिफिनीशन दी गई थी 1987 में ब्रुंटलैंड कमीशन ने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of the future generation to meet their own need. लेकिन आज के दिन में जब कभी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो केवल अपनी जनरेशन की बात करते हैं और नीड की भी नहीं, लग्जरी की बात करते हैं। यदि हम अमेरिका की तरह कंजम्पशन करेंगे तो हमें कितनी अर्थ चाहिए? 5। वहाँ कंजम्पशन आज भी इतना हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, आज के दिन भी वो 5 अर्थ के बराबर कंज्यूम कर रहे हैं और हम 0.7 अर्थ के बराबर। तो कौन ज़्यादा सस्टेनेबल हुआ? फ्यूचर जनरेशन के बारे में कौन सोच रहा है? हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि हम 7 पुश्तों तक का ध्यान रखें, 7 जनरेशन का। यदि हम अपनी ओर से जो हमारी फिलॉसफी है उसके हिसाब से चलें तो दैट विल बी ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही चीज़ आ जाती है पिता के लिए, पोषण करना है हमें अपने यहाँ, जो भी बच्चों का है खास तौर से, उनको इस कैपेबल बनाना है दैट दे कैन यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल। आप सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, आप सब किसी ना किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते हो, लेकिन आप अपनी एरिया में एक्सेल कर सकते हो। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीएसआर में हो, चाहे आप मार्केटिंग में हो, चाहे आप एचआर में हो, आप अपने एरिया में एक्सेल कर सकते हो और वो हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। तो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हर एक की अलग होती है। आपका सिर्फ एक चीज़ का ज़रूरत है कि आप अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज कर सकें। आपको उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और उससे ज़्यादा अच्छा आप डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हो। तीसरा है आपका गुरु। गुरु से जो मुझे शिक्षा मिली है, कई लोगों का मैंने देखा है कि वो लोग कहते हैं जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं दे दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। खासतौर से कॉरपोरेट में ये बहुत ज़्यादा होता है। दे से नॉलेज इज़ द पावर, और कोई भी किसी तरह की नॉलेज शेयर नहीं करना चाहता है। यदि मैं उर्वरण होना चाहता हूँ तो मेरे उर्वरण होने का तरीका यही है कि जो भी कुछ मेरे पास है क्या मैं अपने यहाँ बाकी लोगों को दे सकता हूँ। यदि मैंने वो दे दिया, वो नॉलेज आगे चल रही है तभी उसकी वैल्यू है। यदि वो नॉलेज मेरे साथ चली गई तो उसकी वैल्यू 0 है। और इसीलिए हमारे यहाँ हमेशा इस गुरुकुलों में वो नॉलेज पास ऑन की जाती थी। आज के दिन में काफ़ी चीज़ों में, खासतौर से कॉरपोरेट में मैं देखता हूँ वो नॉलेज पास ऑन नहीं होती है। चौथी चीज़ है पृथ्वी। पृथ्वी के लिए आप क्या कर सकते हो, हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था खाने का। 30% फूड वेस्टेज होता है, और बाहर जर्मनी में 1-2 जगह ऐसा रूल बना हुआ है रेस्टोरेंट में, यदि आपने प्लेट पे खाना छोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा फाइन होगा। और वो फाइन कम नहीं होगा, $100 फाइन होगा, जबकि आप उसका पेमेंट कर चुके हैं पहले ही खाने का, लेकिन उसके बाद भी आपको प्लेट में छोड़ना नहीं है। यदि केवल इतना शुरू कर देते हैं तो जो 30% खाना वेस्ट होता है पूरे वर्ल्ड में, आप समझ लीजिए 30% प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। और 30% प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसका जो वाटर कंजम्पशन है, जो उसका फर्टिलाइज़र कंजम्पशन है, जो आपका लैंड डिग्रेडेशन है, जो फॉरेस्ट लैंड एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट होती है, वो 30% कम हो जाएगी। तो 30% केवल खाने की बचत नहीं है, 30% आपका इन्वायरमेंट की बचत है पूरी। वही चीज़ पानी में है। आज हम सब लोग बोलते हैं पानी का कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं कहता हूँ पानी के कंजर्वेशन नहीं, पानी को कम पोल्यूट करने की ज़रूरत है। रिवर को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। रिवर तो अपने आप 1 साल में क्लीन हो जाएगी, पूरा पानी बह के समुंदर में चला जाएगा। लेकिन जो पानी आ रहा है उसमें हम उसमें गंदगी ना डालें। वो गंदगी नहीं डालेंगे तो वो अपने आप क्लीन हो जाएगी, हमें कोई जाके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। और जबकि कई लोगों को मैंने देखा है, इवन हमारे यहाँ भी बोला गया है, गवर्नमेंट में भी, क्लीन गंगा।
अरे गंगा तो अपने आप क्लीन है, हम उसे पोल्यूट कर रहे हैं। हम पोल्यूट करना बंद कर देंगे, गंगा अपने आप क्लीन हो जाएगी। वो तो हमारी माँ है, धरती भी हमारी माँ है, वो तो अपने आप रिजुवनेट हो जाएगी। लेकिन हमें जो है उसे गंदा करना बंद कर दें। आज उसका सॉइल इरोजन होता है पूरा, आज इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं इतना ज़्यादा जो ज़रूरत से ज़्यादा है। इसीलिए आज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात होती है। मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था पंजाब में एक गांव है, वहाँ से एक ट्रेन जाती है। उस ट्रेन का नाम जानते हैं आप क्या है? कैंसर ट्रेन। क्योंकि उस गांव के हर घर में कैंसर पेशेंट है, और वो इसलिए है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज हुए हैं और वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। जब हम और CSR के लिए यदि हम और देवरणिज नर सेवा नारायण सेवा, यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे, उन्हें दुख नहीं देंगे, तो वही हमारी भगवान की पूजा है। भगवान की पूजा अलग से जाके केवल मंदिर में आरती उतारें या प्रार्थना करें, वो केवल सेवा नहीं है। यदि हम लोगों की सेवा करेंगे, वही हमारी ईश्वर की सेवा है। उसके बाद जब हम CSR में आते हैं, तो CSR में कॉरपोरेट को मैं शुरू से इन्वॉल्व रहा हूँ। CSR का जब ये रूल्स बने थे, जब एक नेशनल गाइडलाइन ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट बनी थी, वो भी शायद आप लोगों ने पढ़ी हुई हो। बहुत ज़रूरी है सभी कंपनियों के लिए। एक बहुत क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो हम लोगों ने बनाई हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई हुई है। उसी के बेसिस पे ये CSR के रूल आए थे 2014 में। तो इसमें रूल क्या थे? कंपनियां तो पहले भी CSR कर रही थी। मैंने बोला पब्लिक सेक्टर पहले CSR कर रही थी, टाटाज पहले कर रहे थे, बिरलाज पहले कर रहे थे। ये तो जब से कॉरपोरेट बनी है तब से कर रहे थे, आसपास के एरिया में कर रहे थे। क्योंकि डेवलपमेंट का काम जो है वो गवर्नमेंट का काम है, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं। वो कंपनीज का काम नहीं है। कंपनीज का काम है कि नीड्स और ऐसे जो उनका गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो बनाना है। उनका काम CSR नहीं है। लेकिन नेबरहुड एरिया में वो स्टेक होल्डर हैं, इसलिए वो भी उनके लिए काम करना है। तो कंपनी का क्या काम था जब CSR का रूल आया? गवर्नमेंट में बड़ा मोनोटोनी जॉब होता है, इनोवेशन नहीं होता है, इफ़िशियंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इफ़िशियंसी और इनोवेशन। और इसलिए सबसे ज़्यादा इनोवेटिव प्रोजेक्ट अभी तक का कौन सा हुआ है? आप सब लोगों ने सुना होगा, वो 108 नंबर सुना है एम्बुलेंस का। वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। किसने की थी? सत्यम ने की थी, जो कि वैसे नोटोरियस हो गया। दैट सॉर्ट ऑफ इनोवेशन इज रिक्वायर्ड। ऐसा इनोवेशन जो पूरे देश में कॉपी किया गया और उससे क्लियर था उनका ऑब्जेक्टिव, कितने लोगों की जान बचाई है मैंने एक्सीडेंट होने से। एक्सीडेंट होता है, गोल्डन टाइम इज 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर उसे हॉस्पिटल में पहुंचना है। और इनफैक्ट मोस्टली वो आधे घंटे के अंदर पहुंचाते थे, और वहाँ से इतनी जान बची। और वो यूनिक सिस्टम जो पहले किसी ने नहीं सोचा था, CSR से ओरिजिन हुआ और पूरे इंडिया में आज चालू है। और पूरे इंडिया में आप कहीं भी 108 कर दोगे तो तुरंत एम्बुलेंस आ जाएगी। दैट इज़ वॉट इज रिक्वायर्ड अंडर द CSR। आई होप आगे भी जो है हम CSR करने से पहले ये जरूर सोचेंगे कि इसमें नया क्या चीज़ है जो कि रेप्लिकेट हो जाएगा, जो कि स्केल होगा, जिसे पूरा देश अपनाएगा, जो कि समथिंग डिफरेंट और इफिशिएंट होगा, पैसे कम लगेंगे, टाइम कम लगेगा। थैंक यू वेरी मच। Now, I would like to request Shri Pushparaj Dalal, who is the Senior Vice President CSR, Sulabh International Social Services Organization. Kindly come here. Please welcome him with a big, big round of applause, everyone. Namaskar. So you've heard very diverse views on CSR, on Viksit Bharat. तो जब कोई फौज को कहीं पे विजय पानी होती है, तो जो कर्नल होता है, जो बेस पे होता है, उसके 2 काम हो जाते हैं। एक तो होता है जवानों को मोटिवेट करे, सो दे टॉक अबाउट लॉट ऑफ मोटिवेशनल थिंग्स, हाउ वी विल डू इट, वी हैव टू डू इट एंड यू हैव टू डू इट, sacrifice country. The second part is, after the Jawans they're gone, they leave, he calls in the platoon commanders and talks strategy with them. कि इस पहाड़ पे चढ़ाई करनी कैसे है, कौन सी पलटन कहाँ से चढ़ेगी, कौन कहाँ से फायर करेगा. So I'm just giving you an extract example.
तो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक तो रास्ता है ही विकसित भारत बनने का अध्यात्म के रास्ते से, वो तो हम मानते हैं, हम हैं। एक रास्ता और भी है विकसित भारत बनने का, जो कि यूएनडीपी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक डिफाइन करते हैं। क्या है? कुछ इंडिकेटर्स हैं कि जब आप इन इंडिकेटर्स को पूरा कर लोगे तभी आपको विकसित देश कहा जाएगा। उससे पहले हम जाते हैं CSR समझते हैं। पहले CSR बहुत जल्दी से समझते हैं। CSR फिलैंथ्रोपी नहीं है, 2013 के बाद तो बिल्कुल नहीं है। एक मैंडेट है कि जो कंपनीज जो समाज में काम कर रही हैं वो बहुत कुछ समाज से लेती हैं, रिसोर्सेज लेती हैं, दे एक्सट्रैक्ट वाटर, दे एक्सट्रैक्ट a lot of resources from earth, from the country. So they are supposed to pay back to the society in some form, and that is what the CSR mandate is. That 2% of your annual profit you have to reinvest in societal or environmental projects. अभी क्या है वो space? Currently, from 13 onwards, 2013, the CSR mandate came in. There's a consistent increase in number of companies who are complying with CSR guidelines, and there's a consistent decrease in number of companies who are not complying. So this yellow line represents the companies which are complying, and the red line represents companies which are not complying. I'll just actually take it out on my this thing. So abhi current spent, the total CSR spent in the country as per 23 is 25,000 crores. So which is not a small amount by any means in terms of volume. ये हम आगे देखेंगे कि इसका विकसित भारत में क्या पोर्शन है। सेकेंड पार्ट जो पहले भी बताया गया कि CSR स्पेंट कुछ थीमेटिक एरियाज में ज़्यादा हो रहा है। 12-13 की लिस्ट, जो वो 12 की लिस्ट है, बट इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लिस्ट बिकॉज एक एक में 5-5 एरियाज लिखे हुए हैं। एक ही लाइन में लिखा हुआ है पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, दे आर मल्टीपल एरियाज, बट ब्रॉडली द स्पेंडिंग इज हैपनिंग इन, maximum spending is happening in healthcare and wash. Wash is water, sanitation and hygiene. Educations and skill development, rural development, environment, gender equality. So these are the 5 or 6 broad areas in which most of the CSR spending is currently happening, which I think is in a way correct because that is the maximum emphasis is required in these areas only. Let's now look at the CSR spent geography-wise. As we heard that Maharashtra, Gujarat, Andhra, Karnataka, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है because the head offices of most of the corporates are in Mumbai, Andhra, Hyderabad, Bangalore, Chennai, and they want to do the initiatives very close to their headquarters. So the geographical spread is uneven right now. So this is a broad landscape of the CSR. Now let's look at scientifically what does a developed nation mean? Not necessarily in our definition. Globally, what does it mean? Globally, there are economic indicators of a developed nation and there are non-economic indicators. Economic indicators आपने बहुत सारे सुन लिए हैं already टेलीविजन पे, स्पीचेस में, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, इतना ये, इतना वो. आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट ब्रॉडली आई हैव लिस्टेड आउट द ब्रॉड इंडिकेटर्स: GDP per capita, gross national income, per capita income, external debt to GDP ratio, balance of payments, fiscal balance, inflation rate. These are some economic indicators. Let's come to the core subject of what our domain expertise is, are the non-economic indicators. The most important, Human Development Index, HDI as we call it, life expectancy, multidimensional poverty, access to basic services like water, sanitation, gender inequality, social security systems, environmental sustainability, and the Gini index. Gini index is largely which tells you the geographical spread of economic inequality. Going further,
नाउ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली कि हमें विकसित भारत बनना है, स्टेटमेंट पूरा ये है कि हमें विकसित भारत 2047 तक बनना है. So when something comes into a time frame, you can always plan and strategize how to get there by setting up something called a log frame. अगर आप कोई डेवलपमेंट सेक्टर से हैं तो आपने बहुत काम किया होगा लॉग फ्रेम पे, which defines your objective, your aims, which defines the activities that you will do to get there, which defines indicators which will prove that yes, you have achieved this or not achieved this. How will you verify those indicators? So we can evaluate our current status, where we are today, on some of these broad indicators which are a bird's eye view. ये 8-10 indicators नहीं है, ये these are the main indicators. There will be 80 sub indicators, there will be 800 sub indicators. वो वॉल्यूम बहुत बड़ा है इस पूरे स्पेस का. But these broad 8 indicators that we are saying from a bird's eye view at 30,000 feet. One second. Let's look at where we are in terms of the literacy rate. Currently, we are at 77.7%, which needs to go to 100%. Healthcare systems, currently we spend 2% of our GDP on healthcare, which needs to be 6 to 8%. Currently, 10% of the population lives below poverty line. This is all government data. This is not even external countries' data or UN data or whatever. This is what the government is saying. So 10% people or more need to be pulled out of the poverty line. We rank 85th in the corruption perceptions index. We have to reach the top 25, and not reach the top 25, it's the reverse way. So we have to be in the 25. We rank 127th in the global gender gap report. We are targeting at least a 75% women workforce if we have to be a developed nation. Likewise, you can continue. There is agriculture related, there is technology related, there is urbanization related, innovation related. So there are a lot of indicators where we currently know where do we stand currently and where do we need to go. And the way to do that is not only get motivated and have a strong belief, but also have a good, robust and strategic plan to get there, which you can benchmark at every year. You have to have a very strong monitoring system. And this is where development partners play a huge role, especially in the non-economic factors. Sorry. Yeah. So now moving forward, what I said 25,000, सुनने में बहुत बड़ा amount लग रहा था, 25,000 crores. Actually, it is only 0.08% of our GDP. तो 100 रुपये में से 8 पैसे हैं CSR funds में, which have to be utilized in the right way to help the government reach that vision, and which is a beautiful vision. And as somebody said, it is compulsory now. We all deserve to be part of a developed nation. So to reach that vision, we have a very little contribution to make, but it can be made very strategically and needs to be made very strategically. Now MCA says, though CSR spend is going up every year, what is the challenge that the MCA has noticed is that a lot of CSR work is happening, but there is no measurement of the impact. The impact is not being felt. So that tells us a story that the CSR work that we are doing is not measurable, or we are not designing tools to measure the impact that we are creating. So you have to again go back to the planning board with what I discussed. A log frame is a typical tool which will tell you what is the change that you are bringing, which will help you to measure the change that you're talking about. Can we move forward? So there are other tools like effective altruism. There is another tool called
the mini, the max min principle. So these are some of the tools which I don't want to, because of the paucity of time, I'm not going to get into the theory part of it. These are some tools that you can use when you are planning your CSR activities. Okay, so this is something which I want to talk about a little bit. Positive deviance करके एक concept है. So this is actually an anecdote. It is a historical fact. I'll tell you it as a story. 1970s की बात है. After the Vietnam War, Vietnam was really struggling to resurrect themselves. And what they found was that a lot of children in Vietnam were malnourished. 8 children out of 10 were malnourished. The government tried to do everything in their power, top-down approaches usually that happen. And they were not able to decipher the problem. So one wise man in the room said कि 8 में से 2 बच्चे ऐसे भी तो हैं जो malnourished नहीं हैं. Why don't we study them instead of trying to study the 8 children that we are talking about? And when they studied them, they found that in the same communities, in the same geography these people were staying, but how come they were not malnourished? उनकी माएँ उनको चुपके से shrimp खिलाती थी. And shrimp was a taboo in Vietnam in those days. It was taboo because it was seen as something harmful for children. But it was a huge source of nutrition. तो वो जो shrimp खिलाती थी, वो उनको जब पता चला तो they realized कि जब research हुई तो shrimp was a high source of nutrition. So instead, now the government changed 2 things. One, they didn't do the top-down approach anymore. They made these women as the voices of change. They didn't tell that you do this. They brought out case studies, they took out case stories and gave them projection, made them the voice, and they became the agents of change. And they transpired this idea into other people. And slowly, through positive deviance, a cultural taboo was converted into a cultural norm. अब सिर्फ वियतनाम नहीं, पूरा दुनिया shrimp खा रहा है. So, and at that time it was considered a taboo. So it is just an example of if you apply your mind in terms of when we say innovation, technology, they always go hand in hand. But there are a lot of innovations which are possible even without technology. Technology is 100% the benchmark of change now. The way mobile phones have come in, the way different technologies are coming in, AI is coming in, we have to cope with them. But besides that, there are ways to develop human-centric approaches जहाँ पे innovation काम आता है. दूसरा example मैं खुद की अपनी organization से देता हूँ. Legendary Dr. Bindeshwar Pathak, who was our founder, he invented a unique solution for rural sanitation. रूरल एरियाज़ में गांव में सिवर लाइन नहीं होती है, तो आपके टॉयलेट के लिए पहले संप बना देते थे और बाहर से ट्रैक्टर बुला के, टैंकर बुला के उसको खाली कराना पड़ता था. सो ही केम अप विद द ट्विन पिट टेक्नोलॉजी कहते हैं उसको, बट इट वॉज अ सिंपल ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन. लोगों की नीड को समझते उन्होंने एक गड्ढे की बजाय 2 गड्ढे बनाए और नीचे से उस गड्ढे को सीमेंटेड करने की बजाय खुला छोड़ दिया. सो एक गड्ढा चालू करते थे, एक को ब्लॉक कर देते थे. ओवर 3 years दिस वुड फिल अप. So they would block this and open the other one. Meanwhile, the water would be soaked and what would remain was manure, which could be used in your fields. So neither you needed manual scavengers to take it out, neither you needed tankers to take it out. It became something which was useful, odorless, colorless, whatever. There was no smell in it. So you could just take it out and use it in your fields. And over 3 years, this would fill up, you open the other one. And this actually became the mainstay of the ODF movement. इसी पे भारत सरकार ने 16 करोड़ जो टॉयलेट्स बनाए हैं वो लार्जली स्कीम को यूज़ करते हुए बनाए रूरल एरियाज़ में. अर्बन एरियाज़ में आपकी सिवर लाइन होती है, आप कनेक्ट कर देते हो. सो देर आर सिंपल एग्जाम्पल्स अराउंड अस ऑफ इनोवेशन विच आर नॉट ओनली टेक्नोलॉजी ड्रिवन. दूसरी बात पूछता हूँ, आपको कहीं पे 1 घंटे में, आप ही से पूछता हूँ किसी बच्चे से कि आपकी स्पीड है कि आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलते हैं. Somebody says that you have to reach me, I am 5 kilometers away from you. You have to reach me in 2 minutes. How would you do it? Or 5 minutes? Yeah. So you
will simply take a bike or a car. So what you are doing is you are simply using technology. So there will be many human problems where technology will become a solution. But there will be many human problems where commonsensically, common innovations can also be the solution. So there is no end to thinking, and the best part about Viksit Bharat is that the government has started on the right note. Right now what they're doing is they're inviting ideas across the board from youth, from students, from professionals across the country, and that is called stakeholder engagement. They are inviting ideas of Viksit Bharat. There's a portal open where everybody can send your vision of a Viksit Bharat. It might be, out of the roof, but they will pick out the best ideas out of that. So the best way to start is stakeholder engagement. जिनके लिए करना है उनको उसमें participant बनाना बहुत ज़रूरी होता है. So we've started on that. I think in this year a broad roadmap is underway, is being built, and that is where collaborations of people in the CSR space can happen. That one, we identify those core areas where we can make maximum impact, और उस impact को हम measure कर पाएं. So that becomes the mainstay of contributing constructively. Thank you. Now I would like to request Dr. Binay, please kindly come on the stage and honor the guests on the stage. That is Dr. Deepika Chandok. Please applauses everyone. Request Dr. Binay kindly honor Dr. P. Sanjay. Applauses everyone. Please kindly honor Shri Sanjay Arora. Please honor Mr. Sanjay Arora, and after that Mr. Abhishek Chawla. Shri Dinesh Agarwal. Shri Pushparaj Dalal. Thank you so much everyone on the stage. Thank you so much. Now we'll have the next session, session 4. So thank you so much. Now I would like to request Professor Dr. D.P. Singh, if he's here, kindly come on the stage. Dr. Suresh Reddy, please kindly come and sit on the stage, be seated on the stage. Dr. Suresh Reddy. Shri G.S. Babaji, can we have some applauses everyone for them?
And now, firstly, I would like to request Shri G.S. Bawarchi, ex-GM PRAAI, that is Airport Authority of India, right? Yes, kindly come on the dais and say a few words. Good morning, everybody. That was my test. How many you are awake? Okay. All right. This is my habit generally. If I join some event, I start in the morning and try to stay till the valedictory, because I can get more than I can give. And it's my duty to empty my cup and keep on filling from that. And I was in the audience of youngsters, and I could see that when everything was happening on the stage and they were busy and occupied with their own adventurous things. It's good. And addressing this event after the video from Prem Rawatji, it's an insightful happening, right? So thank you very much, everybody, and I am sure that you are picking up the things which is fortunately the global CSR leadership conclave. Now, why and how I am here? At the outset, thanks to Gulani Saab, he's an old friend, and I know that in corporate world, no one can say no when he calls. So, and exactly in parallel this time, across the road in the regulatory body, there is a stakeholder consultation meeting going on. And it was scheduled, it is announced much earlier, and I am supposed to be there. But I requested my president, because I represented a body called Air Travel Association, which represents the passengers, and there is some requirement, I should have been there. But I told him, sir, nahi, I am lined up and I cannot do this. So president is attending there and I am here. Thank you, sir. And then thanks to Dr. Binay, who made this happen, and I thought that yes, we will be talking. He said, you must spend some time at the podium. I said, okay, it was my honor. Actually, I was to come here to listen. So as I mentioned, this is the scenario under which I am standing here. And at the outset, let me dwell on certain points which are mandatory, right? And now everybody is sitting here. There is nothing I can give you. Particularly, it is mentioned in the era of Google University and all those social media power. We cannot give you anything which is very unique. But only thing we can make that unique if we intermingle our thoughts and reactions. And that's what I was talking during the break. The retention of youth in particular, and in that process our own retention time is reducing. It is becoming so small that I skip very important messages because I am in the habit of skipping them very fast. So it means our decision taking capacity is very fast. So I would like that to keep you in a way that you take home something back. You try to interact, and don't think that whatever I have brought, I can share on my LinkedIn account, my Google, which I generally do it. And many times people don't take me seriously because they say कि बाबा साहब की speech है शाम को LinkedIn पे देख लेंगे. It is my habit. I don't keep it anything with me. And somebody said that information is power. No more information is power. Sharing information is power. I always learn more from questions the people raise. And every answer I give another question, and that is my learning mode. I am not a CSR man. I am a corporate planner, which turned into be in the end and head of the public relations department. So a good chairman he said ki Baba, we want somebody who at least knows the organization. Only he can head the PR. I said okay. So even the job qualification were not befitting, but he changed that also. So that's what. So brief overview of CSR I wanted to give, but now it is not needed because it is the close of the day, everybody is there.
but then some very specific things which I will mention, and after that I will prefer that you start questioning. And I feel that there was pulse of feeling also, whole day you are listening. This monologue should not be which you should carry home. And you should also not get used, particularly हमने तो पूरी ज़िंदगी यही देखा है, कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में यही होता है कि स्पीकर बोलते हैं और बोल के चले जाते हैं, फिर बाद में हम डिस्कशन करते हैं उसने ये क्यों बोल दिया, ऐसे बोलना था. जब वो बोल रहा था तब तो हम ना सोचते थे ना पूछते थे. तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट बी इंटरेक्टिव, राइट. So now the four important pillars. I am not calling it the 4 P's of the 5th P, but the 4 important pillars of progress. Number 1 is education and skills. You flag these points and and lifelong learning, skills development and education reforms are in the form of quality education. You must have seen all these points have been spoken by all speakers during the day. So quality education, and why I am pointing this that here is that you are, I hope that you are going to deal with the CSR in your life. And if you are going to deal with the CSR, you must know what are the burning items or burning topics which you should resolve. Why you will, first of all, why you people are here? Because there are गुड़ के ऊपर ही मक्खियाँ आती हैं. शहद की मक्खी कहाँ आएगी? उसी फ्लावर पर आएगी जहाँ पर नेक्टर है. एंड वाई यू वांट टू डू CSR? क्या आपको कोई बड़ा फिलैंथ्रोपी का शौक है? नथिंग. बिकॉज देयर आर फंड्स अवेलेबल एंड यू वांट टू गेट दोज फंड्स. एंड हाउ you will get those funds? By making a good presentation. I have been rejecting proposal which had the recommendation of PM and President level. We didn't approve. Chairman said, no, this doesn't solve any of our problem. So any proposal, if is not addressing a cause, no one will be listening you, right? So you must resolve those points, only then your proposal will become attractive. So quality education, skill training and vocational education, digital literacy, research and innovation. These are the subtopics under education and skills which you must try to address and resolve while making your proposals. Only anybody will try to look at you. Then everybody had been talking health and well-being, and you have seen one after the another, the NGOs, everybody is well-being. Because why? Because it is one of the important of the 4 pillars, health and well-being. Under that, universal access to quality healthcare and wellness, which comes in the form of healthcare infrastructure development, right? So your proposal should address that. Preventive healthcare, mental health, nutrition and sanitation, all right? And somebody said that what is the role of CSR in GDP development? I say economic empowerment is because of CSR only, right? So under economic empowerment, inclusive economic growth, entrepreneurship and job creation. These are the sub goals. Specifically, you should, somebody rightly said, entrepreneurship and startups. We as CSR should support entrepreneurship and startups. Job creation and skill-based employment, there should be barometer. Whatever proposal you are bringing, how many jobs it is creating, how much skill-based employment it is creating, and then it should have financial inclusion. It's not that you are spending money and then you are not happy. There should be happiness derived out of that. So financial inclusion shall be there. And then infrastructure development. You should not expect that everything which you want to do, only the corporates will do. Something will have to come from your side. And also, CSR is not one time. If you have got some funds for a couple of years, after that you will have to get another set of funds. So that is the reason it should be continuous, and you should have a infrastructure development under that. And then 4th is governance and institutions. Under that, effective, accountable and transparent governance. That is very important. And then institutional reforms, anti-corruption measures, judicial reform and decentralization and local governance. So
And then they are not independent. All the four sectors I have mentioned, there are interconnectedness, right? So these pillars are interconnected and interdependent. Progress in one pillar will have position impact on the others, and implementation strategy will vary from one sector to another. But broadly, you should concentrate on collaborative efforts between government, private sector, and civil society. Long-term planning and policy stability is very important, whatever proposal you make. Data-driven decision is the norm. So anything you do, it should be supported with the data, right? And inclusive and participative approach should be the fundamental to your proposal. And then there are certain books and references which have come in the market. But then one good book you must look. It is expensive, but you must can take the efforts of social media. Some form it is available, or e-version available. All libraries are there. You should always be a member of one good public library. And India at the rate 100 by Vijay Subramaniam, landmark book. It also sums up in the form of 4 pillars, which he calls macroeconomic focus on growth, inclusive growth for a large middle class, ethical wealth creation, virtual cycle ignited by the private investment. They are just very small condensed form, I have told you, but there are 100 pages on each item in his book. That motivates us. Yes, CSR is very important. And where are we? We say corporate PSU, etc. We are not growing. If growth is not there, then who will grow? If we want to say कि हमें को इंडिया को इस लेवल पर लेके जाना है, तो India must grow, but how? At the rate of 8% annual growth, we cannot reach anywhere. So public sector is growing only at the rate of 5%. So as such, private sector needs to open up, but they need the enabling sector-wise push. And that is what is coming from the government. Today, if the seminar is happening, it's because there's something happening on the top layer. The virtual cycle of economic development, I recall, now we are talking of virtual cycle, but I talk when it's college days, Paul Samuelson book. I am in the habit of reading the original authors. We used to have a book of Paul Samuelson, and at that time he used to talk of the virtual cycle of economic, which has a multiplier and accelerator model. So that you must look at, and it is projected that by the end of the century, the Indian economy will be about 90 to 100% larger than China, and perhaps we will be 30 to 40% of US. This is as latest as when Prime Minister was there and somebody from the chamber they quoted. So if the world is having that kind of faith in us, then where are we? So that we need to open up. And in this background, I again want to sum up. Firstly, let's look at the digital literacy, right? With over 500 million internet users, India has the potential to leverage technology for social good initiative. And so PMGD Disha is one program like that. There are many, but we should look into that. And secondly, telemedicine. People are thinking that doctors will be a thing of the past because telemedicine will be all go robotic. But then that is where the digitization will happen. Thirdly, AI-powered education, right? We know that Coursera, Byju, all those platforms are replacing the classroom education, all right? And then from where the transparency and the confidence of the financial models will come, it is from the blockchain technology. So we must master the blockchain technology so that we can build the confidence among the end users. Lastly, digital payments have increased financial and with financial inclusion, with over 50% of the Indians now having a bank account.
That's an indication, yes, we are in the right direction. Thus, technology has the potential to transform India's social landscape, and let us embrace innovative solutions to achieve our CSR goals and create a विकसित भारत. तो विकसित भारत बातों करने से नहीं बनेगा भाई, है? विकसित भारत बातों करने से नहीं बनेगा, काम करने से ही बनेगा. और हम यहाँ से बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, तो थोड़ा बहुत आपको जो घड़े की चिकराहट है वो कम करनी पड़ेगी, राइट? तो यू रफ अप योर सेल्फ, एंड आई थिंक वी आर अवेलेबल. You should have some interactiveness wherever possible, right? Thank you very much. Thank you, sir. Now I would like to request Dr. Suresh Reddy, Lead CSR and Director SRF Foundation. Kindly come on the dais. Thank you, ma'am. So I'm going to take 5 minutes time. I close it up. So it's a 4:45. Next, please. So we completed 10 years of CSR in India. So we are talking about empowering India. 2014 CSR started. Before 2014, the companies have been doing the community service voluntary basis. So it became a law, and 10 years we completed. Now, after 10 years of time, where we are, we see that when we are talking about empowering India, we have spent almost all 217, I can say 2,17,000 crores. In last 10 years of time, all companies together who are supposed to do CSR, they spent 2,17,000 crores in last 10 years of time. And what is it going to be next 10 years? Coming decade, it is going to be 3 times more than the what we spent so far. That is going to be 7,20,000 crores by end of 2034. This is the trend. That means India is growing, the economy is growing. Along with the economy, the CSR also grows. This is the empowering India. So India is empowering, and the CSR is coming more. This is the fun. Next slide, please. Where this money is going? So if you are spending 100 rupees, 70 rupees are going to the 5-6 sectors. One is education sector, health, slum and rural development, then talking about environment, poverty elevation or hunger, malnutrition, and livelihoods. These are the 6 sectors attracting 70% of the CSR money. That means 100 rupees you are spending means 70 rupees these sectors are attracting. So far we spent 2,17,000 crores, out of which 70% of the money gone to these 6 sectors. That is the chart shows that. This is the study done by the an organization called Give Grants. What I am sharing here, it is not I am sharing. This is the research study carried out by the Give Grants. Next. Then again here in the companies, we have different kinds of companies. We have the MNCs, Indian companies, small and medium enterprises, PSUs. These are based on the ownership, different kinds of companies. At the same time, we also have the companies like listed, unlisted. The listed companies are there, National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. Those are unlisted, they are running the business but they are not listed. Shares are not traded kind of thing. So here, the share of unlisted companies, it is growing from 40% to the 49.16%. That means almost all equal, 50% level. That means the unlisted companies' contributions is increasing day by day because of the startup ecosystem. New companies are starting up, coming up, and they are there. There is another trend, you can see that. Next, please. When come to the amount, if you see today we are in 24-25, as per the data of the 21-22, so that time 1,26,000 crores we spent, out of which the larger of money has gone to the Maharashtra state, because Mumbai is the business capital, Delhi is the political capital. So a lot of companies are there in Mumbai headquarters and kind of thing. Even today, the highest percentage of CSR goes to the Maharashtra state. That is it shows that also. At a pan-India level, out of 1,26,000 crores, so 51,000 crores across all states together
the Pan India projects has been implemented. Next, please. This is the, you see, state-wise percentage. As I said, so far, 2,17,000 crores we spent last 10 years of time, where it is going, and which state is attracting. The state-specific, the percentages are there. You can see that Maharashtra is grabbing almost 11%. Followed by Odisha, 6%. Delhi, almost 5% something. Then Karnataka. Then talking about Tamil Nadu, Rajasthan and Gujarat. These are the states attracting the more CSR money. So this is the state-wise percentages. Next, please. If you see this picture, when compared to what government is spending for the social welfare, the benefit of the welfare state of the population in the country, the CSR contribution is just only 1.3%. The government spends 19 lakhs 70,000 crores government spends. But the CSR out of this is 1.3% for this year, that is 33,000 crores. So compared to government, it is a minuscule, very small, tiny bit CSR spend. But the purpose is not the money. The idea is that how do you use this money to create the solutions the government can scale up. Others can scale up. That is the purpose of CSR, not the CSR money that you are transforming yourself, entire nation. No, but what are the solutions we are creating that solutions can transform the nation through the government department. Next, please. This is the last slide. Here we are talking about how this CSR money coming next decade, talking about is that how we are talking about the CSR leaders who are giving their opinion about that interested in the collaborative projects. It is not a company doing on its own, one company doing multiple projects kind of thing. Coming together, 2-3 companies, 4-5 companies and creating the collaborative project by leveraging each other's knowledge and strength. The second thing is about, they're talking about developing the pilots or innovative solutions. So businesses are good at doing their business, how these businesses can create the solutions for the social problems where the prototypes or pilots they can launch and showcase to the world. The last one, so they're trying to build the ecosystem, the institutions who has to able to deliver the things on the ground. So which is a missing element part kind of thing. So the NGOs, their capacities, systems and process, policy framework, monitoring systems, these are the ecosystem we call it as they're going to be spend some money on that part. So these 3 things is going to be focusing more in coming decade. So I stop it here. These are the few thoughts I thought of sharing with you people. Empowering India to develop CSR in the Indian economy. Thank you. Yeah, definitely. If you have any questions, you can please ask. You will not get that opportunity once again. And also, I would like to request Dr. Binay, please kindly come and honor. Okay, and Shri Mahesh Gulani ji, I would like request you to please come and honor Shri G.S. Babaji. They are learned, already learned a lot. Good, thank you. पहले शॉल पहना दो. Thank you so much, sir. Getting an honor from you. Please honor Dr. Suresh Reddy as well. Thank you so much. Now, I would like to request Shri Mahesh Gulani ji to say vote of thanks to everyone. Thank you. So we have come to the concluded of this program.
We hope you have all enjoyed the 4 sessions. Distinguished guests, government officers, all they were speaking very well on CSR, and we have learned so many things from them. Today, CSR, on certain points, they all have told us very important things which we have come to know. All 4 sessions has gone very well. Lastly, I will say, being the strong volunteer of Shri Prem Rawat ji, Shri Prem Rawat Foundation, he is the world-renowned international speaker of peace in the universe. What he says that peace resides within you only. And we are searching throughout world. We go to the so many temples, places to search for peace. But peace resides within us. Once you understand him, you get the good techniques from him, where you can go inside and you will feel peace. There is a book stall is there outside to the seminar hall. You can see the books and you can come to know more about Mr. Prem Rawat. Now we all can enjoy the cup of tea, where you all must be tired. You can have a cup of tea with the snacks. Thank you. Thanks for coming to us. So before joining for tea, let us have certificate distribution as well. So I would like to request Sanjay sir and Dinesh sir along with Binay sir, please kindly come on the stage. So I'm going to announce the names. Please kindly come everyone on the stage. Arpit Shrivastava. अर्पित श्रीवास्तव करने का प्रशांत कुमार, शानू झा, शानू झा, Archana Mishra. We'll have a group photograph as well, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, so just wait everyone. Archana Mishra, Neha Singh, Ruchika Sethi, Preeti Dhareja, you are expired. Vivek Kumar, Amit Kumar, Ayushi Pal, Vishal Kumar Verma, Vishal Kumar Verma, Akash Gupta, Ashish, Rishabh, Rishabh Seth. You are? Okay. Rishabh. Vidhi Verma.
Vidhi Verma? She's not there. Jatin Kumar? Jatin Kumar? Harsh Chauhan? Mohini Kumari? Diksha Tiwari? Jyoti? Sneha? Tulsi Sharma? Anu Jain? Jyoti Singh? Abhinav? Shrishti? Divakar? Anyone remaining? Okay. Aviral? Sir, group photo leni hai? Can we have a group photograph, please? Everyone, please come and join on the stage. A group photograph. Sir, आप लोग तो बैठ जाइए. Please, everyone, come and join for the group photograph. नवीन बैठ जाओ, नवीन बैठ जाओ, जाओ सीट है, बैठ जाओ, बैठ फोटो में आ जाओ कि बैठ जाओ, जाओ बैठे, बैठ, अरे बैठो ना, रुको तो, अरे बैठो, जगह फोटो में आना है। हाँ क्या करना है, आ जाओ, ठीक, मैं बेसिकली